A very warm welcome to my friends of class 11 science. Today we are going to discuss about something you have experienced but something you have never learned, and that thing is tension. 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 So what is exactly tension? देखो tension क्या होता है? Suppose if I give you 10 questions and ask you to finish all those 10 questions in 1 hour, okay, चलो ठीक है. If you do 9 out of that, बोले सर ठीक है यार 10 क्वेश्चन सर ने दिए थे 9 कर लिए, तो if 9 questions are correct, sir is going to appreciate, so you become happy. But if suppose I give you 100 questions and ask them to solve in 1 hour, then that becomes very difficult. बोले यार ये सर ने questions दिए हैं, there are 100 questions and he wants me to solve this in 1 hour. It is just next to impossible. बोले सर खुद नहीं कर सकते, मेरे को दे रहे. ठीक है, तो क्या होता है दिमाग में कुछ क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है? टेंशन क्रिएट होता है. मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड दैट समथिंग इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग, देन व्हाट इज क्रिएटेड? देन द टेंशन इज क्रिएटेड. ओके, अभी फिजिक्स में भी टेंशन का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ही है. दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स बट द इफेक्ट ऑफ फोर्स वो पूरा हो नहीं पा रहा है, then what is created? Then tension is created. All right. Now, अब कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें टेंशन क्रिएट हो सकता है? What are the type of objects? So the very simple object in which tension is created is a string. String क्या होता है? What is string? You can see this. This is a string. ठीक है, इस तरह की स्ट्रिंग, इस तरह के धागे को स्ट्रिंग बोलते हैं, लेकिन ये धागा ऐसा वैसा धागा नहीं है. ये स्पेशली दिस इज ए फिजिक्स वाला धागा. ओके, अभी फिजिक्स वाले धागे में फिजिक्स की वाली प्रॉपर्टीज होती हैं. द फर्स्ट थिंग, मास इज जीरो. द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज जीरो. अरे यार, हाउ इट इज पॉसिबल? धागा है, मेड अप ऑफ सम मटेरियल है, तो उसके अंदर मास भी होगा भाई, मास होगा. बट द थिंग इज दैट द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी मासेस. द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी मासेस, and compared to the masses of that bodies, the mass of the spring becomes very less. That means the mass of the string becomes negligible. Okay, so what we take mass of the spring, the mass of the string equal to 0. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर equal to 0 लिखने में आपको अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, then you can say that the mass is nearly negligible. Okay, the other thing is delta L equals to 0. delta L मतलब change in length is equals to 0. मतलब कि आप इसको कितना भी खींच दो, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी. The change in length of the string equals to 0. अच्छा, तीसरी चीज F is equals to 0. इस पे फोर्स भी 0 होता है. Oh my God, चैप्टर कौन सा है? Laws of motion. It's about what? It's about forces. And in this string the force is equals to 0. क्या मतलब? ओके, मतलब तो है, निकल के आएगा अभी. सी, फोर्स इज 0. दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन दिस स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0. Why it is equal to 0? See, mass of this is nearly equal to 0. What is F? F is equals to ma. If mass is equals to 0, the force will also be equal to 0. Okay, so remember these three things about the string. Mass is equals to 0. Change in length इसकी हो नहीं सकती, और इस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं लग सकता, because the net force on this string is always equals to 0. So whatever forces are applied on it, they will always be equal and opposite. ठीक है, ऐसे दिखाओगे तो ऐसे भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखाओगे तो ऐसे भी दिखाना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाए. ओके, जनरली वी से दैट action force and reaction force are always equal and opposite, and they act on two different bodies, right? But if those forces are acting on the same body, action force भी और reaction force भी अगर एक ही body पे act करते हैं, तो क्या होगा? उस body पे total force कितना हो जाएगा? The net force on that body will become equal to 0. Okay, so this is something known as string. String जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. दिस इज ए स्ट्रिंग. ठीक है ना, यहाँ से कुछ लोग इसको ऐसे पुल कर रहे हैं. ये एक हो गया, है ना. देन द सेकेंड वन इज ऑल्सो पुलिंग इट. एक और आदमी बना देते हैं यहाँ पे. द थर्ड वन इज ऑल्सो पुलिंग इट फ्रॉम दिस साइड.
and there are 1 2 3 people on the other side who are also pulling this string. ठीक है, they are trying to pull this string this side, they are trying to pull this string this side. So the group A is applying force on group B through what? Through the string. That is action force. Group B is also applying force on group A. That is again what? That is again through the string. Okay, so for a string, the action force and reaction force are acting both through the string. So the net force on the string becomes equals to 0. Okay, now how to calculate this? तो string में क्या लगता है? Force of tension लगता है. अब इस tension को आप calculate कैसे करोगे? So there are some examples. ठीक है, कुछ examples हैं इसके. First of all, very simple example. This is a ceiling, छत है. This is a string and this is mass m. Mass m is stationary. Okay, draw the free body diagram of this mass. One is the gravitational force mg acting in downward direction. Other is the force of tension acting in upward direction. ठीक है, अभी मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है in downward direction, but it is not going downwards. Why it is not going downwards? Because there is some force which is also pulling it in upward direction. What is that force? That force is coming through the string. And what is the force in the string? It is a force of tension. Right? What is this force of tension? Downward force equals to upward force, T equals to mg. Finished. Coming to the second example. Now here, instead of one mass, there are two masses. Small m, capital M. Because the string are not one, there are two. One string connects m and the other string connects m and the ceiling. तो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हो गई. कितने टेंशन होंगे? दो अलग टेंशन होंगे. ठीक है, और टेंशन फोर्स को कैसे बनाने का? हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट. So for this body, whenever you want to calculate tension forces of these kind of diagrams, you have to start from the lowermost body. सबसे नीचे वाली body से start करने का थोड़ा easy रहेगा. You can start it from the top body also, no problem. But to avoid confusion, we are starting from the bottom body. FBD of this body, mass is equals to m. The downward gravitational force is equals to mg, and the upward force is equals to T1. Okay, because this mass is neither going down nor it is going up, T1 will be equal to mg. Okay, now free body diagram of small mass m. जितने forces m पे लग रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सबको बनाना जरूरी है. So one is a gravitational force mg which is acting in downward direction. Other is this force T1 which is acting on this again in downward direction. See, tension T1 acts on this mass in upward direction, but it acts on this mass in downward direction. So downward forces on this are 2, gravity and tension T1. Okay, now is this m going down? No, that means there is some force which is acting on it in upward direction. What is that force? That force is T2. So three forces acting on this body, I have done all the three. Because this is not going down nor it is going up, that means upward forces and downward forces are equal. What is upward force? T2. What is downward force? mg plus T1. Okay, what is T1? यहाँ से लिखो T equals to mg, take g common, m plus m. This is the tension force T2 and this is the tension force T1. All right, now coming to this example. Suppose जैसे अपन इसको लेते हैं ना, you can see this mic. इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ so you can see it clearly. This is the string. ठीक है, अभी string को मैं बिल्कुल खींच नहीं रहा हूँ. I'm not pulling this string anyhow. What is the tension in this string? The tension in this string is equals to 0. The tension on this string is equal to 0. I'm dropping it. ड्रॉप कर दिया. अब भी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है? 0. जैसे मेरी टाई में टेंशन फोर्स कितना है? 0. क्यों? बिकॉज दिस इज टाइड ओनली फ्रॉम वन एंड. इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ इस नॉट से लग रहा है जो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा. सो देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज हेल्डिंग दिस स्ट्रिंग. क्लियर? सो when you have such cases, the tension force on these will be equal to 0. But when you start pulling it, ठीक है ना, इसको मैंने पुल करना शुरू कर दिया. ठीक है ना, ये शायद आपको दिखाई नहीं देगा, so I'm using my tie. ठीक है, when you are pulling this, you can see tension is created. Tension is created. Okay, like in this example, this is my hand, this is the string, and the string is tied to a knob of any door or anything. Okay, my hand is pulling this string
with a force F. The string is pulling this handle with a force F. The string is applying the force F on this knot. Clear? Again, the knot as an equal and opposite reaction force will also apply a force on the string that will be equal. समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, मैं फोर्स F से इस स्ट्रिंग को खींच रहा हूं. स्ट्रिंग फोर्स F लगा रही है इस हैंडल पे, तो हैंडल स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएगा? F. ठीक है, अभी टेंशन को कैसे बनाने का है? इक्वल एंड अपोजिट. मतलब एक्चुअली में द हैंड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द नॉब ऑफ द डोर थ्रू द स्ट्रिंग. The knob is also applying some force, equal and opposite force on my hand, that is also through the string. Okay, so in this case, what is the tension force? The tension force is equal to the applied force. Okay, clear? Now, the last question for today, the last problem for today. This is mass capital M, this is mass small m, and this is a frictionless pulley. यहाँ पे बीच में पुली लगा दिया. Okay, ये बात याद रखना that if the string is same, the tension will be same. If the string is same, the tension will be same. So this and this is one complete string. Here also you draw forces tension T and T. Here also you draw two forces of tension T and T. अब बोलोगे सर यार 2 बार बनाया आपने, 4 बार बनाया. मैं इसको 400 बार भी बना सकता हूं. I can draw it 400 times. But out of those 400 times, I have to take care that the net force on the string must always be equal to 0. तो अगर मैं 400 forces लगा देता हूं, then 200 forces will be in this direction and the remaining 200 forces will be in this direction. So what will be the net force? Net force will still be, it must be equal to 0. Okay, now coming to this. What is the forces on this? Downward gravitational force mg, upward force t. ठीक है, पुली को छोड़ो, पुली को मतलब नहीं है. बट यहां पे टेंशन फोर्स कितना होगा? T equals to mg. Okay, now what is the tension force on this mass? That is also equals to T, that is equals to mg. So इस पे कितना टेंशन फोर्स लगेगा? mg लगेगा. Right? अभी this question can be थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं. If because of this tension the mass is accelerating A in downward direction. ठीक है, the mass is accelerating A in downward direction. So how can you calculate this acceleration? It can be easily calculated. ठीक है, थोड़ा सा FBD बनाना है आपको. This can be easily calculated. The calculation of tension of force we will discuss in the next video.